Good morning, students. Today is 8th, and yesterday we have started some content related to exercise 3.2. I hope that you understand all the concept, but still, if you did not understand, by this exercise, you will get to know each and everything. So, here I am going to start exercise 3.2. First question is from the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. जो भी प्रॉब्लम्स अब हम करेंगे उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस एल्जेब्रिकली सॉल्यूशन में आएंगे. उनकी वो प्रॉब्लम हमें ग्राफिकली सॉल्व करनी है, उनके सॉल्यूशंस शो करने हैं, राइट. सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz. Right? So how we are going to start? कैसे शुरू करेंगे हम? हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10. जिसमें जो गर्ल्स हैं दे आर 4 मोर देन द बॉयज़. इट मीन्स जो लड़कियां हैं अगर हम बॉयज़ में 4 ऐड कर दें तो वो उनके इक्वल हो जाएंगी क्योंकि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, राइट. और इन दोनों का जो टोटल है वो है 10. सो अगेन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we have to let the number of girls be x and boys be y, right. So here we will have the equation, right. So I am going to start the solution. Okay, let the number of boys be x and number of girls be y. Okay, as numbers are given to you. So according to question, then according to question, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं वो 10 हैं. इट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 10. सो इट विल बी आर फर्स्ट इक्वेशन. और टू अंडरस्टैंड मोर clearly we can write total number of students is equal to 10. तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10 लिख सकते हैं हम. नाउ सेकेंड फैक्ट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये फैक्ट दिया हुआ है दैट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़. नहीं, अगर बॉयज़ के नंबर में हम 4 ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स, क्योंकि लड़कियां 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से, 4 ज़्यादा हैं बॉयज़ से. सो हेयर वी हैव द इक्वेशन y, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y इज इक्वल टू x प्लस 4 और 4 प्लस x एज यू विश, राइट. सो हेयर वी हैव टू इक्वेशंस. और क्योंकि सॉल्यूशन ग्राफिकली लाना है तो वी विल ड्रॉ अ ग्राफ. टू ड्रॉ अ ग्राफ वी हैव टू मेक अ टेबल फॉर लाइन. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द ग्राफ. लेट अस ड्रॉ द graphs of equations first and second. Okay, first and second. So for that I am taking
the equation number 1. X plus y is equal to 10. So we can write it in terms of x, y is equal to 10 minus x. Isn't it? Now make a table for x and y as we have done earlier also. I am taking table in this. X and y coordinates are there and we have to take some values. I am taking the value like for x is equal to 0. If x is equal to 0, अभी मैंने पीछे आपके लिए सॉल्यूशन किया था इन टर्म्स ऑफ x, y is equal to 10 minus x. So y is equal to 10 minus x. So 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10, because y is equal to 10 minus x. x की वैल्यू मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी. Now we have another point. To find out another point, what we are going to do? We will do y is equal to 0. If y is 0, then what will be the value of x? If y is 0, x will come to this side and y is equal to 10. So it will also be 10. So 0 10 10 0 दो पॉइंट्स आपको मिल गए कहाँ पर? x एक्सिस और y एक्सिस पे, right? Now we have to take some other points as well. So I am taking anything, like you can take 3, you can take 2, you can take 4. So I am taking 2. If x is 2, then y will be 8. If y is 3, then x is equal to 7, right? So this way we can find out the table. Now for equation number 2. Equation 2 is y is equal to x plus 4. It is already in terms of x. So we can make a table for equation number 2, right? x, y. अगर x 0 होगा तो y की वैल्यू 4 आ रही है. x 0, y is equal to 4. If y is 0, then x is equal to minus 4. Got it? Minus 4. Here I am going to take another point. Let it be 1. If x is 1, 1 plus 4 is 5. Right? आप चाहें एक और point ले सकते हैं. Okay? So it's up to you. Because you have to learn one more thing from this question, that इस question में आपको क्या निकालना है? Number of boys and girls which can never be negative. अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स नेगेटिव नहीं हो सकते. सो वी कैन टेक वन मोर. मैंने ये पॉइंट जानबूझकर लिया था सो दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि जब भी नंबर्स की बात होती है या रुपीज़ की बात होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते. तो आप खुद समझदार हैं कि क्वेश्चन को पढ़कर ये जान सकें कि जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं या नहीं हो सकते, क्योंकि ये वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट होता है. वेरिएबल में क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर आप वेरिएबल में निकाल रहे हो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता. So take one more point here. I am taking, what would you like to take? I am taking 3. If x is 3, then y is 7. Got it? Now come to the graph paper to plot these points. So from first table, I am plotting the points 0, 10. When x was 0, y was 10. यहाँ पर आई एम गोइंग टू शो यू द क्वाड्रेंट विच आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू. एक्चुअली मैंने यहाँ पर पॉजिटिव क्वाड्रेंट लिया है. एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव. मैंने एक्स डैश वाई डैश को एक्सटेंड नहीं किया है. एज आई टोल्ड यू कि
नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी ही नहीं। क्यों नहीं आएंगी? बिकॉज हमें नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स निकालना है जो नेगेटिव नहीं होता है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यू कैन सेव योर पेपर एज वेल, और आपको कंसेप्ट भी क्लियर होता है कि जो वैल्यूज़ नेगेटिव आनी ही नहीं है उन्हें हमें लेना भी नहीं है। वी हैव टू अवॉइड। दूसरा स्केल मैंने लिखा है। पेपर सेव करने के लिए एक तरीका ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ ना हो तो आई हैव टेकन हेयर हाफ ब्लॉक इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन both the axis, x axis as well as y axis. Now start. When x was 0, then y was 10. So this is your first point. Okay, points को आप लिख भी सकते हैं। क्या point होंगे आपके? 0 and 10. Slowly you can do it. Just take your time and understand carefully. Next point is 2, 8. 2, 8. It means when x is 2, y is 8. When x is 2, y is 8. So my next point is 2, 8. Third point is 7, 3. Third point is 7, 3. When x is 7, y is 1, 2, 3. So 7 and 3. And last point is 10, 0. 10, 0 when x is 10, y is 0. So this is 10, 0. Okay. These are the points for first line. Okay. Now I am going to draw the line. Yes. Here we have the line. I have used pen so that clearly you can see the points as well as the line. और कहीं पर भी आप एक जगह इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। आपने कौन सी इक्वेशन के लिए ये लाइन ड्रॉ की है? x plus y is equal to 10. So first line is this one. Now take second points with the help of second table. Our second table says जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 4. 0, 4 पॉइंट कहाँ आएगा? y एक्सिस पर, क्योंकि y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है एंड आवर पॉइंट इज 0, 4. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नहीं लेना है बिकॉज इट इज़ नेगेटिव। इसको मैंने ही करके दिखाया है, आपको नेगेटिव पॉइंट लेना ही नहीं है। जब आप वैल्यूज़ निकालते हैं, रफ में करते हैं, ओरली करते हैं, तो जस्ट चेक कि नेगेटिव आ रहा है या नहीं। जस्ट लीव दैट पॉइंट। 1, 5. 1, 5. व्हेन x इज़ 1, y इज़ 5. यहाँ पर आप 1 के साथ 5 यहाँ पर आ रहा है, वेयर आई हैव रिटन। So this is 1, 5. And last point is 3, 7. 3, 7. So 3 per 7. 3 and 7. Here we are having the point on this line. तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 3, 7 point है, it is common for both. It is common for both. And I am going to draw the second line with the help of these points. Here we have both the lines. This system of linear equation is intersecting. Intersecting है, एक point पर एक दूसरे को intersect कर रही हैं, so that we can say they have unique solution. What is the unique solution? 3, 7 जो दोनों में common है। What is the unique solution? 3, 7 is the unique solution. तो इन दोनों का solution भी यही digit और यही pair of coordinates होगा। और यहाँ पर हम equation of line लिखेंगे y is equal to x plus 4 और y minus x is equal to 4. It's up to you, right? With the help of this, we can share the number because both the lines, I'm writing solution in the copy, hence the two lines
लाइंस, हमने 2 लाइंस लिखा, इन लाइंस को आप नेम्स दे सकते हो, लाइक 2 पॉइंट्स लेकर इनको ABCD भी लिख सकते हो, या फिर सिंपल इज L1 और L2. ओके, दीज 2 लाइंस, तो नेमिंग करने में आसान होगा और आपको आंसर लिखने में भी ईजी होगा. द 2 लाइंस L1 एंड L2 intersect at point 3 7. So x is equal to 3 and y is equal to 7 is the required solution. Okay, so here we have the solution of first part of first question. In homework you have to do second part. In homework you have to do second part. I will send you the exercise pic also in still motion. Okay, now I'm going towards next question. Now we have second question on comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2. Find out whether the lines representing the pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident. जैसा कि मैंने आपको कल समझाया था कि हम रेशोज़ के थ्रू विदाउट प्लॉटिंग ग्राफ शो कर सकते हैं कि रेशो से कि इस लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, दिस एंड दैट. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर ऑन comparing with ax plus by plus c is equal to 0, we have, मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इनको कंपेयर किया है. सो एज वी नो दैट a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, ये हमें निकालना है. सो दैट वी विल राइट द पॉइंट्स दैट a1 इज़ 5, b1 is -4 and c1 is 8. Okay, and from second equation we have a2 is 7, b2 is 6 and c2 is -9. Now find out the ratios. On having the ratios we will have that a1 upon a2 is equal to 5 upon 7, b1 upon b2 is equal to -4 upon 6, 2 to the 4, 2 3 the 6, this is -2 upon 3. As we are seeing that a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so it is our first case of intersecting lines, so there is no need to find the ratio of c1 and c2. As we can see that because a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so the lines first and second are intersecting lines. Student, this exercise is based on this content only. That is why rest of the part of second question you have to do in homework. In this also you have second and third part in homework. Now third question is also similar, but in second question we were finding whether the lines are intersecting parallel or coincident. Here we have to find out on comparing the ratios the given pair of lines or linear equations are consistent or inconsistent. You must remember what I told you. क्या बोला था मैंने आपको? अगर किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में उसके कोफिशिएंट्स के रेशोज़
या फिर ग्राफ से आप ये देखते हैं कि लाइंस सॉल्यूशंस देती हैं, लाइक इंटरसेक्टिंग लाइन एंड कोइंसिडेंट लाइन, बोथ गिव्स यू सॉल्यूशन। उनमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो जिन भी सिस्टम्स में सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट होती हैं, और जिनमें सॉल्यूशन नहीं होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होती हैं, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू take 2 points for solution. The given equations can be written as, क्यों लिख रहे हैं हम ये कैन बी रिटन एज? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसी में आपको पहले इक्वेशन को कन्वर्ट करना होता है। इक्वेशन में इक्वल के इधर ज़ीरो ही आना चाहिए। सो वी आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड। 3x plus 2y minus 5 is equal to 0 and another is 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. So this is our pair. अब फिर से कंपेयर करते हैं हम। a1 is 3, b1 is 2, c1 is minus 5, a2 is 2, b2 is minus 3, c2 is minus 7. अब आप इनके रेशोज़ निकालेंगे। रेशोज़ निकाल के हमें पता चला a1 अपॉन a2 इज़ 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इज़ 2 अपॉन माइनस 3। वंस अगेन यहीं पर हम रुक जाएंगे बिकॉज हमारी ये दोनों रेशोज़ इक्वल नहीं आ रही हैं, और ये रेशोज़ जब इक्वल नहीं हैं तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होता है एज a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 have unique solution। यूनिक सॉल्यूशन है, और अगर इसमें यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या लिखेंगे? hence the pair of linear equations is consistent. Okay, I'm doing third part as well for you as well. Third part, second and fourth you have to do in homework. Second and fourth you have to do in homework. So we are coming to third part. Again, given equation you have to convert in this form. Just check the ratios. a1 is 3 upon 2, b1 is 5 upon 3 and c1 is minus 7. Okay, a2 is 9, b2 is minus 10, c2 is minus 14. Here we have a1 upon a2. a1 upon a2 is 3 upon 2 upon 9. ये आप सबको पता होगा कि अगर रेशोज़ में दिया हुआ है या तो हम इसका ऊपर जाके रेसिप्रोकल करते हैं या फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यू विल गेट 3 अपॉन 2 9 18. ओके, मिडिल टर्म्स एक साथ मल्टीप्लाई होती हैं और जो फोरमोस्ट होती हैं वो एक साथ होती हैं, राइट। उसके बाद आप निकालेंगे b1 अपॉन b2 इज़ 5 अपॉन 3 अपॉन माइनस 10। ये फिर से आ गया 5 अपॉन माइनस 30, 5 upon minus 30. So 5 is a 5, 5 6 a 30 minus 1 upon 6 minus 1 upon 6. Okay. And it is also 1 upon 6. This is 1 upon 6. और इसमें भी हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दीज लाइन्स आर ऑल्सो इंटरसेक्टिंग हैविंग सोल्यूशन. बाई चांस वी गॉट बोथ द सोल्यूशन सेम. Intersecting solution is there, therefore the lines are consistent, and you have to do second and fourth part in homework. Now, as we have done up to third question, fourth question you can do yourself because there
इन फोर्थ क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी चेक करनी है और उसका ग्राफ बनाना है. नाउ आई एम टेकिंग अ वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ये आपका गार्डन है, इसका हाफ पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 36 मीटर. पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ any kind of rectangle is 2 into length plus breadth. ओके और यहाँ पर विड्थ दी हुई है इसलिए मैं यहाँ पर विड्थ लिख रही हूँ. ब्रेथ और विड्थ यू कैन राइट. सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ. लेकिन आपको क्या दिया हुआ है? हाफ द पेरीमीटर. जब पेरीमीटर का आप हाफ करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? हाफ ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 L प्लस बी, इजंट इट? अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पेरीमीटर का जो आधा है वो होगा लेंथ प्लस ब्रेथ. लेंथ प्लस ब्रेथ. ओके सो लेट समथिंग फॉर दिस. सो लेट length be x, breadth be y. You have to write this statement. Let the length be x meter and its width be y meter. Okay, so half of perimeter is equal to, in place of length I am writing x and in place of width I am writing y. So half of perimeter already आपको given है in question, it is 36 meter. x plus y. तो यहाँ से आपका क्या आ गया? फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा उसने कहा जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 मीटर ज़्यादा है. सो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन width. So your second equation is x minus y is equal to 4. I have made 2 equations for you and here you can solve this to find out the solution with the help of graph. I hope you can solve it graphically. Same you have to do here as we have done earlier also, and find, as for hint I am telling you, in this and this equation 1/1, 1/-1. It means a1/a2 is not equal to b1/b2. That is why these are intersecting lines और जो intersecting point होगा वही इनका solution होगा, वही rectangular garden की length और breadth को show करेगा. So now you can complete exercise 3.2 and we will meet again for next exercise in next class. Thank you so much. Bye bye.